So we are doing okay. No, in October number 1522. चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं. इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज गिवन and they're asking for the wavelength. We know that the X-ray has a speed of 3 exponent 8. Okay, so we can use that. And C equals to F lambda. Okay, and C is 3 exponent 8 divided by 4.6 exponent 20. And this is the wavelength. कितनी आती है भाई? Are you guys getting anything? So I Sir, am 6.5 mhm, exponent negative negative 6.5 exponent negative 12 negative 13. negative 13. Okay. So we have to make it in picometers, which means we have to give it in negative 12 thing. So you can just divide the whole thing by 1 exponent negative 12. So that will convert the whole thing into picometer, or otherwise you can just say 0.65. Okay. Fine. Ajaji, by the way, so they're saying the distance from the Earth to the star is this much. Calculate the time for the light to travel from the star to the Earth in gigaseconds. Okay. So we assume the light to move, or actually the light move with a constant speed of 3 exponent 8, and the distance is given, so we can just divide distance over speed, and distance is 8.5 exponent 16 divided by 3 exponent 8. Okay, so you'll get 2 point something something exponent 8, I think, and that would be 230, I think. Yeah, but 2 something something exponent और गीगा सेकंड, बस ये हो जाएगा. निकाल दो कितना आता है. 28 28.3 टू एट पॉइंट एक्स 2.83 टू एक्सपोनेंट 8 exponent 9. Sorry, exponent 8, yes. exponent 8. And if you have to make it to exponent 9, so that would be 2.28 recurring. Okay. तो और इसकी अगर हम चेक करें, आंसर चेक करें, 0.23 to 0.28. Okay, fine. सही. You can just divide the whole answer, like we got 2.833 exponent 8 na. So you can just divide it by 1 exponent 9, which is the gigasecond, or which is the giga factor. So it will convert the whole thing for you into gigaseconds. Okay, fine. Acha ji. So they're saying the following list contains the scalar and the vector quantities. All underline all the scalar quantities. Okay, so there's the mass, power, and the temperature. These are the three scalar quantities here. Okay. Acha ji, Rayan, can you please read the question? A boat is traveling in a flowing river. Figure 1.1 shows the velocity vectors for the boat and the river water. The velocity of the boat in still water is 14 meters per second to the east. The velocity of the water is 8 meters per second from 60 degrees north of east. Okay. On figure 1.1, draw an arrow to show the direction of the resultant velocity of the boat. Okay. So, so you just need to draw an arrow. Okay.
where the arrow would look like. अगर आप इसका head to tail rule बनाओ, so this should have the greater length, so the resultant should look like this. Okay. You don't have to draw the whole triangle, but you can you can get you can just guess the actual direction of the resultant using this thing. Okay. So ये हमें पता चल गया on the figure. So you have to draw it on the figure. Okay. You can cut and paste it right here. इसको तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. Okay, and यहाँ पे you can just make the arrow to in this direction. Okay. More toward the horizontal because the horizontal velocity is greater. Okay. So boat velocity, okay, and the water flow, and this is the resultant. Fine. चलो आगे आ जाओ. Yes, Ryan. Determine the magnitude of the resultant velocity of the boat. Okay. So this was the boat's velocity, which is 14. Okay, and this is the water velocity, which is 8, and this is at an angle of 60. Okay. Anything else? No. And we have to find this velocity. क्या use कर सकते हैं हम? Any idea? We can So we use. can find the components of V. है अगर हम V8. डायरेक्ट कॉस रूल इस्तेमाल कर लें तो हो नहीं जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? और डू यू वांट इट टू यूज वेक्टर रेजोल्यूशन और Yes, we can use cosine rule. कोसाइन रूल से डायरेक्ट आ जाएगा. सो कॉस थीटा और कॉस 60 इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 8 into 14. Okay. Now you can make R the subject, and 64 plus 14 का square is I don't know. I think 249. No, 194. 194 and minus 2 times 8 times 14. Okay, and cos 60. Okay, and This just is square root of 14. I think it's 196. okay, 196. Okay, just root the whole thing जो भी आ रहा 12.12. है. Okay, so 12.2. 12.2. Okay, so just 12 भी ले सकते हैं हम. 12 अगर हम यहाँ पे देख लें. Yep, 12.2 और 12 both are acceptable. Fine. And इसकी भी वैल्यू बता दो. इसकी क्या वैल्यू आ रही थी? ये चलो खैर होगी. 148. Okay, 148. Fine. चलो done. Okay. Irfan, please read the question. Figure 2.1 shows an object M on a slope. M moves up the slope and comes to rest at point Q, and then moves back down the slope to point R. M has a constant acceleration of 3 meter per second square down the slope at all times. At time t is equal to 0, M is at point P and has a velocity of 3.6 meter per second up the slope. The total distance from P to Q and then to R is 6 meters. Calculate the motion of M from P to Q and find the tangent. Okay. अच्छा जी. From P to Q is this motion. Okay. Now. So we know the constant acceleration up the slope, and that is 3. Okay. And
and the constant acceleration down the slope. Okay, so if you're moving up the slope, you have to put the negative sign. Okay. Okay, now at t equals to 0 at point where it has a velocity of this up the slope. Fine. And so they also said that it come to rest at point Q. So the final velocity is 0 at this point. सही हो गया? And the total distance from P to Q and then to R. So P to Q and then Q to P again and then back to R is 6. Okay, so this is the distance and not displacement. Okay, so the time taken you can use acceleration equals to V minus U over T. Okay, so -3 equals to the speed is at 3.6, which is the initial speed minus 0. Okay, and divided by T. Okay, so T equals to -3.6 divided by -3. Okay, so 3 ones are 3, 3, 1.2 are. Okay, now, okay, they're saying the distance traveled, okay, from P to Q. Okay, so distance traveled mean we can use um 2as equals v square minus u square. Okay, so s is to be found. The final speed is 0. The initial speed is 3.6 squared and divided by 2 into -3, and that's it. Okay, so please calculate the value. Could you scroll a bit up? Sorry. Can you scroll up Mm-hmm. to the time taken question? 3.6 squared divided by 6. So I am getting the distance as 2.16. Okay, which means you have to go this like this distance is 2.6. Okay, and then this again distance is 2.6. So if you times it by 2, you will get double the distance, which is 4.32. And if you subtract it with 6, you will get this distance, by the way, if you want to. So 6 minus answer. So I am getting this distance as, okay, this distance as 1.68 and this distance as 2.16. Okay, now fine. Show that the speed of m at r is 4.8. Okay, so we have um we can take, अच्छा हम यहाँ से ले सकते हैं मोशन को लाइक ये अगर हम पॉइंट आर ले लें पॉइंट क्यू. So at point Q, the initial speed is, let's say, 0, and let's say this is point R, and we have to find the velocity at this point. Okay, and they say that the acceleration down the slope is 3 meters per second squared, and we have the total distance. Okay, we have this total distance, which is 2.16 plus 1.68. Okay, okay, so इनिशियल इसको 6 मत लेना प्लीज, दिस इज नॉट 6. ओके, 6 बेसिकली 6 बेसिकली ऊपर तक जाने का, देन वो टर्न बैक करके यहाँ पे आने का, एंड देन नीचे तक का. दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट रेफर्स 6. ओके, सो इफ यू आर मूविंग वन वे अप विच इज 2.16. ओके, एंड सो आप बेसिकली इसको इस तरह से सोच सकते हो. सो सॉरी, यहाँ पे कह रहे थे. सो डिस्टेंस पी क्यू. ओके, देन क्यू पी. ओके, then PR is 6. Okay, and if PQ is 2.16, then QP should also be 2.16 but in the opposite direction, and R would be just 1.68. सही हो गया. So ये इसके breakdowns हैं, distance के breakdowns हैं, right? So this will combine up to 4. Okay.
चलो ये बात हो गई। अच्छा जनाब। सो okay, so we have the zero speed initially, and we have the total distance of 2.16 plus 1.68, right? And we have the acceleration down the slope as 3 meters per second, okay? And we are interested in the final speed, so that would be 2as equals to v squared minus u squared, okay? Now, please calculate the value. 3. Yes, are you guys getting anything? Sir, 4.8 is the answer. 4.8, fine. So 2 into 3 into 2.16 plus 1.68, and you root the whole thing, so you'll get 4.8 is equals to final speed. Fine. क्या समझ में आई ये बात? Is that clear? Yes. Yes, sir. Okay, आगे आ जाओ. Now they're saying on the figure 2.2, draw the variation with t of the velocity v of m for the motion p to q to r. Okay, fine. So whenever you have to draw the speed time graph or any graph, and okay, by the way, they have given you all the axis values, okay, the x-axis and the y-axis values. So you have to take all the points at the different instant, and you have to plot it. Then you have to draw the line, okay. So now over here, if you consider, so at point P, the time was 0, right? When the speed was 3.6 up the slope, okay? Up the slope, I'm just making the arrow in this direction, okay? Because that is a speed time graph, so we have to consider the velocity, or the velocity time graph. So हमें direction भी consider करनी है, okay? So this is at P, okay? And at Q, it take the time of 1.2 second to reach to the top, 1.2 second, okay? And the velocity goes to 0, okay. This is the second point, okay. Now when it returned back to p, when it returned back to p, so ये at obviously बात है, time double हो जाएगा, right? So the time should be 2.4 comma the speed would be 3.6, but this time downward, okay, down the slope, okay. And then when it reaches r, okay, so we don't know the time, but yes, we know the speed, that is 4.8, okay, but this is down the slope, okay. So we can find out the time taken, by the way. So okay, they're giving you 3 marks for that. Okay, so the time taken is hmm, अच्छा जी, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं. So the distance travel is just 1.68, okay. Yeah, चलो हम पूरा distance okay 1.68, because we are just considering this distance, okay. इसको जरा सा सही कर लो. 1.68 plus 2.16, okay. So we are basically considering this distance only, okay. So for this distance, we have the final velocity of 4.8, and we have the acceleration of 3.0, right? And you can use for time, you can use oh man, come on. Sir, S equals to Vt minus 1 upon 2 at squared. अबे यार, लेकिन उसमें फिर quadratic बन जाएगी ना, और कोई आसान सी जिंदगी नहीं करनी अपनी. चलो, V equals U plus At. u plus v equals to u, चलो ये कर लेते हैं. We also know the speed at that distance. The initial speed is 3.6, by the way. So yeah, चलो हम ये ले लेते हैं. So t equals to v minus u over a. Okay. So 4.8 minus 4.8 minus 3.6.
divided by acceleration, which is 3. Okay, कितना time आता है? 1.2, 0.4 second. 0.4 second. Okay, fine. So basically, from this point, from this point to this point, it required a further of 0.4 second to reach R. Okay, so previously it was or it take 2.4 second, right, to return to P, right? तो अब उसको जो है उसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दो. So this will be at 2.8 second, right? Clear? Is that clear? Any problem? No, sir. Yes. Fine. Now we can take these point. Wait, we can take these. Sorry. And हम इसको जो है वो प्लॉट कर लेते हैं. Copy and paste. Fine. So okay. So the first point should be at 0 comma 3.6, 2 2.4 2.8 3.2 and 3.6 is right here. Okay. Now the second point would be at 1.2 and 0. So at 1, 1.1 and 1.2. So at this point. Okay. This is the second point. Okay. You have to make sure that you're drawing the velocity time graph, and you have to make sure कि इसका gradient constant होने वाला है. Okay. So you're not allowed to change the gradient, right? So gradient throughout the motion वो constant होगा. सही है. And okay, the third point would be 2.4 and 3.6 again. 2.4, 2.5, 2.4 would be right here, and 3.6 would be right there. Okay. Now the fourth point would be at 2.8 comma 4.8. Okay, so 2.8 comma 4.8. Okay, so this is 4.4 and this is 4.8, and 2 2.6, 2.7 and 2.8. This point यहाँ पे. Okay. Okay, and now you can connect all the points. सही है जी. Okay, don't take it further. Okay, because the motion is till 2.8 seconds. So बस यहाँ यहीं तक कर दो. सही. अच्छा जी. And अच्छा, do we have to make this line, or बाकी 0 पॉइंट नेगेटिव में? ओके. सो ये तो हमारी लाइन जो है वो इस तरह से भी बन सकती है. सो यू कैन ऑल्सो मेक द लाइन लाइक दिस. ओके, विद अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, या फिर जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट में भी बना सकते हो, राइट? सो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज यू हैव टू शो एनी ऑफ द थिंग्स. ओके, लेट्स सी इसकी मार्किंग की क्या कह रही. स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस. ओके, ये तो हमने बना दिया. स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस at okay, ये हमने बना दिया. Then straight line continue with the same gradient as v changes the sign. Okay, a straight line from v equals to 0. Okay, intercept to v is negative 4.8. Okay, fine. चलो. अच्छा, अगर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें क्वेश्चन 2 की, आई थिंक द पार्ट सी. There were many answers that gave first part of the graph correct to the time of 1.2 second where the velocity was 0. The line was then often continue at the different gradient and did not end at the
given final velocity. Okay, so in the previous part 4.8 is a given or is a final velocity, right? There were many answers that showed a v-shaped line that was confined to the positive values of the velocity. Okay, so positive values of the velocity means you are making the speed time graph and not the velocity time graph. Okay, right? A significant number of candidates gave no response to this question. Candidates should be reminded that the constant acceleration result in a constant gradient for a velocity time graph throughout the motion. Okay, fine. Chalo. Okay. आगे read कर लो please. So the mass is given, by the way. Calculate the difference in kinetic energy of m at p and at r. Okay, fine. So kinetic energy at p is basically half m, which is 0.45. You have to convert it, okay? And the velocity at p is 3.6 squared. You don't have to consider the direction. And kinetic energy at r is 1 over 2 into 0.45, okay, and 4.8, 4.8 squared, okay. Then just subtract the kinetic energy of R minus the kinetic energy of P. You will get some value. कितनी आती है भाई? Yes, how much? 2.3, Okay. 2.26. So you are saying 2.26 mean 2.3. Okay, fine. 2.3. 2. Okay, good. Perfect. Okay, please read the question. Ryan, please read the question. A trolley team moves at speed 1.2 meters per second along a horizontal frictionless surface. The trolley collides with a stationary block on the end of a fixed spring as shown. The mass of T is 250 grams. T compresses the spring by 5.4 centimeter as it comes to rest. The relationship between the force F applied to the block and compression X of the spring is shown. Okay. Can you tell me what the gradient will give you and the area? Yes. So the area won't give anything. Cube? Reynolds area will give elastic potential energy, gradient gives spring constant. Direct? Check the axis, please. उल्टा axis है We bro. have to change it to meters. अबे ओए 1 over spring constant ना, right? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes. Okay, yes, it's Newton per meter. Yes, sir. Yes. So if you divide, so x over f is basically 1 over k, right? Clear? Fine. Now Yes. आगे आ जाओ. Use figure 3.2 to determine the spring constant of the spring. Okay. So if they're saying use it, so you have to use it and you have to tell them कि gradient is equals to 1 over the spring's constant. Spring's constant, right? Now, so the gradient is by the okay. So just I'm considering 0, 0 as 1 point, and the other point is, let's say, the last point, okay, which is 5.2, 5.2, okay, and 4.4, 4.4, okay, 5.24, 5.4, and this should be 4.24, 4.4, सही है 4.4, okay, and सही है चलो. So हमने ले लिया for 5.2 exponent -2 because it's in centimeters, so हमने convert करना है -0 divided by 4.4, it's in Newton, -0. Okay, so this is gradient. How much? 0.012. Okay, so you're saying gradient as
0.012. Okay, so for the spring constant आपको जो है ना 1 over gradient करना पड़ेगा 0.012. So that will give you the spring constant. 84.6. Okay, so we can consider it as at 85, 85. Okay, let me show you the marking key. Okay, look, they are making this thing. Okay, so and 81 आ रहा है बे. हमारा 81 आ रहा है क्या? I'm getting 83.3. They use 5.4 over 4.4. हमने भी ये यूज किया है. 5 पॉइंट, एक मिनट. 5, oh सॉरी सॉरी माय बैड. 5.4 में ही लिखना चाहिए था. सही. सो 81 पॉइंट समथिंग का क्या बना था? 81.4, 81.5, 81 ले लेते हैं. 81 सही. अच्छा, इसी ने एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है. सो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट गिव द Yes, करेक्ट sir, एक्सप्रेशन. 81.48. Perfect, perfect. So correct expression for the spring constant. The most common mistake were not converting the unit of the compression into meter or giving the gradient as the value of k. Okay, please keep in mind. जब भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, always check the axis, and according to the axis, just give the values. Okay, some candidate choose unsuitable point on the graph which gave them an answer outside the accepted range. Fine. चलो आगे आ जाओ. The work done by T compressing the spring by 4.5 centimeter. Okay. So you can use area under the graph or you can just use a formula. Okay. Area is equals to work done. It's basically not area under the graph, by the way. It's area above the graph. Okay. So work done. Area equals to work done. So 1 over 2 into F, which is 4.4. Okay. 4.4 and 5.4 exponent negative 2. Okay. Just multiply. 0.18, 0.12. 0.1, 0. क्या मतलब? 0.18, It's 0.14 the mean. 0.118. Okay, okay, okay. 0.12 means okay. Fine, fine, fine. सही है, perfect. चलो आगे आ जाओ. The spring then expands and causes T to move in a direction opposite to its initial direction. At the time that T loses contact with the block, it's moving at a speed of 0.75 meters per second. From the time that T is in contact with the block, describe energy changes. हम्म. क्या कहोगे भाई? कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ एक्सपीरियंस तो करो यार. So the kinetic energy turns into elastic potential energy. एंड देन बस इतना सा. अबे इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा. ओके look, you have to say um as T makes me. ये बात सही आ रही है, कट के आ रही है? So sometimes it Okay, let me just change. Let's see if it work. mm, okay, come on. Allahu Akbar. यार इतना स्लो प्रोसेसिंग है इसकी, दे ही नहीं रहा. मैं मेरा यही बन पड़ा है. ओके खैर, मैं जब तक आंसर लिख दूँ. एस टी मेक्स कॉन्टेक्ट with the spring with a spring, um its kinetic energy will be converted into elastic
potential energy. Okay. Yeah, you can say that. All of its kinetic energy, right? Into elastic potential energy, right? Then when it move in the opposite direction, the opposite direction, the stored, the stored elastic potential energy. You're not allowed to write this way in the exam, okay? I'm just writing it for the like assigning credit. The stored elastic potential energy will convert back into back into kinetic energy. Okay, is that clear, Ryan? Bro, ये जो explanation वाले part होंगे, इसमें you have to be very careful. Okay, yes, क्या ये बात समझ में आती है? Okay, sir. Yes, sir. सही है. इसमें जो है, इसमें मार्क्स थोड़े से मुश्किल से मिलेंगे. ओके, बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. इसमें मार्क्स थोड़े से मुश्किल से मिलेंगे. यू हैव टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद अ फुल सिनेरियो, राइट? एक मिनट दो, मैं जो इसको चेक करता हूँ. ओके, so you have to relate each and everything with a scenario. Okay, one statement will not be enough for your answer. Okay, चलो, मैं इसकी इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी आपको दिखा दूँ, मार्किंग की भी दिखा देता हूँ. सही. Look, kinetic energy of the trolley. Okay, they also mention the word trolley. Or kinetic energy of the object changes to elastic potential energy, strain energy. A better word is the strain energy, not the elastic potential energy, because elastic potential energy is stored when something is stretched, and strain energy when something is compressed. Okay, and elastic potential energy changes to kinetic energy, and lower kinetic energy. Okay, fine. To the block. Okay, is that clear? अगर हम इसका वो भी देख लें. Hmm. Okay, so this answer is part B. There, the answers were generally not given in the sufficient detail for this level. Okay, is Irfan dekh rahe ho? Rayan dekh rahe ho? The change from the kinetic energy to the elastic potential energy was commonly described without reference to the objects involved. Okay, clear हो गया? रैन क्लियर है? आपने भी कोई ऑब्जेक्ट Yes, को sir. इन्वॉल्व नहीं किया था. ओके, सो यू वोंट गेट एनी मार्क अगर आप इस तरह से लिखोगे ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, थ्योरी वाले पार्ट में यू हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल्स, राइट? तब जाके you'll get mark. Okay, and be very specific with the scenario, don't be general. Okay, the energy was then often considered to be converted to heat or sound without referring to the reduce in the kinetic energy. Okay, we didn't consider this point कि वो convert back into kinetic energy हो रही है नहीं हो रही. हमने just लिखा कि they will convert into kinetic energy, but some of the energy will convert into heat. Okay, fine, but हमने उसको नहीं include किया, but वो उसके अलावा भी नंबर दे रहा है. Okay, so yes, चलो. Okay, आगे आ जाओ, last part. Determine the change in momentum of T. ओके, चेंज. अच्छा, हमने ओके, सही है. सो चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम हैज अ फॉर्मूला, एम वी माइनस यू. ओके, नाउ द मास इज गिवन एज 250 grams. Okay, and the change in momentum required the change in velocity. Okay, the trolley T move at a speed of this much. Okay, so this is the initial velocity, and I think the final velocity was also given. This is the final velocity. Okay, so the initial velocity was 1.2, mentioned in the first part, 1.2, and the final velocity is mentioned 0.75. Okay, and by the way, they use these two velocities to say that since the velocity of approach and the velocity of separation is not equal, so that's why they are saying the kinetic energy is not like the whole elastic potential energy will not convert back into kinetic energy. Some of the energy will be lost as the velocities are not equal, right? So you can give reference to that point by making the velocity as your reference point. Okay, so चलो आ जाओ. And since it is changing the direction as well, so क्या करना होगा? 0.25 मास को कन्वर्ट कर लिया आपने. सही है. And times it by 0.75.
plus 1.2. Okay, rebound ka case hai, you always have to add the velocities, or you can just put the negative sign for both the cases. Okay, it will give you the negative final answer, but that doesn't affect your calculation. Okay, for any marks. Okay, बस निकाल दो कितना आ रहा है. 0.49. 0.49. ओके. अच्छा देखो इसके अंदर उसने यही गलती नोट की, कोट की हुई है बच्चों की. लेट मी शो. The correct equation for the momentum was quoted by the majority of the candidate. A significant number did not take into account the vector nature. Okay, they didn't consider the direction of the momentum and subtract the final velocity and the final and the initial momentum rather than adding them. Okay, clear हो गया? So this is a very Wait, sir, common mistake. Okay, clear? can you Okay, explain that? Why did you add? okay. Basically, okay, fine. Basically, um, let me show you. If I consider the final velocity with a positive sign and the initial velocity with a negative sign, because the velocity is a vector quantity, right? कोई मसला तो नहीं? No, sir. सही है. So the final velocity is, अगर मैं इसकी जगह पे रखूँ final velocity, अरे यार, okay. So अगर मैं इसकी जगह पे रखूँ 0.25 की final velocity mass है. So ये final velocity is just plus 0.75 and initial velocity is negative 1.2. Okay, that will, you'll end up getting the plus sign. Okay, is that clear? Yes, sir. Fine, perfect. चलो, okay, आ जाओ. Let's move on. Imad, alive? Yes, sir. Okay, please read the question. Define moment of a force. Moment Sir, of a. it's the product of force and the perpendicular distance from about a point. About a point. Okay. About, okay, fine. Product of force and perpendicular distance about fixed point कह दो ज़्यादा अच्छा है. Okay, about the fixed point. Is that clear? चलो. आगे आ जाओ please. An arrangement for lifting heavy loads is shown in figure 4.1. A uniform metal beam AB is pivoted on a vertical wall at A. The beam is supported by a wire joining NB to the wall at C. The beam makes an angle of 30 degrees with the wall, and the wire makes an angle of 60 degrees with the wall. The beam has length 2.8 meters and weight of 500 Newton. A load of 4000 Newton is supported from B. The tension in the wire is T. The beam is in equilibrium. Okay. Equilibrium का क्या मतलब भाई? Sir, it's a moving like zero resultant force or zero relative moment. Good, 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 good. अच्छा, wait. Before starting the question. Okay. Before starting the question, you can see that we have, it should be this point as a pivot. Okay, we have to consider this as a pivot. Okay, acha ji, these are the two 4000 Newton force and 500 Newton force are acting not perpendicularly with a beam. Okay, so हमें इसके perpendicular component चाहिए. सही है. So we have to consider this component and we have to consider, ये एक काम करते हैं ना, इसका हम बना लेते हैं, इसको लेते हैं, नीचे बना लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पे चेक करनी है, एंड दैट इज, इसकी डेफिनेशन मुझे तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट से चेक करानी है. Look, a common omission was the reference to the distance being perpendicular or between the line of the action of the force and the turning point or pivot. Okay, these are something that the student misses. Okay, so you have to consider the perpendicular nature of the distance. You have to consider the yeah. You also make the reference of pivot in your answer. Okay, or about the fixed point. Candidate should be reminded that the definition is incomplete without this. Okay, so you won't get any mark. Okay, so you will lose one mark for that. Okay, fine. Chalo. So okay, ये हमारे पास है. सही है. एंड अगर हम ये वाले हम चूंकि वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना,
कंपोनेंट बनाने लगे हैं। सो अगर हम इसको हटा दें, सही है, इफ़ वी जस्ट इग्नोर देम, सही है, और इनके कंपोनेंट अगर हम बना लें, सही है, ये आ गया, सही है, ये हमारे पास आ गया, सही है। सो यहाँ पे हमारे पास इनके कंपोनेंट जो बनेंगे, सो ये इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, राइट, और इसका भी एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. सही है, ये इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, सही है। एंड दैट वुड बी 400, नहीं 400, 500, 500, 500 and cos 30, okay, and that would be 4000 cos 30. Okay, is that clear? Now you have two Sir, forces. why not sine? ओए, साइन तो वो वाला होता है ना, अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो, सो इफ लेट्स से this is the force, okay, weight mainly, and this is the inclined plane, okay, so ये आपके पास एक कंपोनेंट बनता है, राइट, और ये आपके पास दूसरा कंपोनेंट बनता है, राइट। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते ताकि परपेंडिकुलर लगे, सही है। एंड जो इंक्लाइन प्लेन होता है, उसका जो भी एंगल होता है, लाइक जो ये वाला एंगल होता है, वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। सो ड्यू टू दैट ये आपके पास बनता है कॉस वाली साइड, ओके, am I getting cos side, and this is sine वाली side, okay. So sine, in this case, sine will become parallel to the beam, which is not required, okay, which is not considered as or producing the moment. Clear? Yes. Yes, fine. Now they're saying by taking the moment about A, okay, A is a pivot then, and अगर हम यहाँ से ले लें by taking the moment about A, so हमारे पास जो है fine. So sum of the clockwise is equals to sum of the anti-clockwise moment, okay. So the clockwise moment will be generated by these two forces, and the anti-clockwise moment will be generated by this force, okay. So we can say that 500 cos 30 times the distance, okay. So weight is basically since it is a, बोलो क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? Okay, Mhm. so since it is a uniform metal beam, okay, so the weight 500 Newton will act from the center, okay, so the distance is 2.8, the total, so you'll have to consider 1.4, okay, plus 4000 cos 30, and you have to consider the distance of 1.4 or 2.8, okay, the total distance, okay. So these are the two moments in the anti-clockwise direction, and for the clockwise direction, it is tension. Sorry, this is the anti-clockwise direction, जो tension वाला है. So T times it by 2.8 क्योंकि वो बिल्कुल end से लग रहा है. Okay, you don't have to consider the angle of 60. Okay. अच्छा, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, और एक और गलती हो गई है. क्या गलती हुई है, दिख रही है तुम लोगों को? वो गलती ये हो गई है. We have to consider this angle. Okay, and this angle is 60, not 30. Okay, it should be 60. And it should be 60. क्या ये बात क्लियर है? Yes, it should Sir, be can you explain how? 60, 60. Okay. Um, Basically, the rule is whatever this angle, the angle between these two components should be the same. Okay. This is the rule, right? You can prove it mathematically. सही है. इन्होंने हमें दे रखा है, इन्होंने हमें, they have given us this angle. Mm, they gave us this angle. Okay. Let's say alpha. Okay. So हमें अल्फा को नहीं यूज करना है, वी हैव टू यूज अ थीटा, ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 90 टू गेट द थीटा, और फिर आप जो है ना उसको फिर आप उसको फर्दर यूज करोगे, राइट, बिकॉज थीटा, दिस थीटा will be equal to that theta, okay, or this angle will be equal to this angle, okay. Is that clear? Ryan, Yes, sir. सही नहीं समझ में आया, बोलो क्या मसला है, पक्की बात है, समझ में आ गया है? No, sir, it's the same thing as inclined plane. यस, बट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि एंगल ये वाला होना चाहिए, राइट.
सो दैट्स वाई वो मैंने पहले नहीं देखा था, सही। मैं उसको 30 ले रहा था, दैट्स इनकरेक्ट। ओके, सो वो आपने कर लिया नाउ। अब आप सॉल्व कर लो। सो cos 60 इज 1/2, ये हो जाएगा 250। ओके, टाइम्स इट बाय 1.4, सही है। एंड ये हो जाएगा 2000, सही है। टाइम्स इट बाय 2.8। ओके, एंड डिवाइड कर दोगे 2.8 से, 2.8 से, राइट। सो ये हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा एंड 1 ज़ा और 1 ज़ा, सही है। सो Say this two become two 125, thousand one hundred twenty. 25, yes. Yes. Okay, I'm getting the same. So 2125, say, which can be written as 2.1 kilonewton. Okay, so this is what we have to show. Okay, fine. Now calculate the vertical component, okay, of the tension. क्या करोगे भाई, ये बात क्या करोगे? You have to find this Sir, component. 2.1 Mm-hmm. sin 30, sin 60. Sine 60. Why? ये वाला component Sir, निकाल लो आप, ये वाला component. Okay. it's cos. Yes. Clear. So 2.125 exponent 3 and cos 60. Okay. How much? 1163.25. Mm-hmm. Sir, 1840. Hey, hey. One No, no, eight. wait. I used sin. Okay. Sir, 1062. अरे चेक करो, आप भाई की प्रोडक्शन चेक करो। 1063। Okay, Yes. fine. अच्छा, let me see the answers कि ये okay, 1063 you can also write 1100 भी लिख सकते हो। Okay, fine. So you can just give it into SF 00। Okay, चलो आगे आ जाओ प्लीज। State and explain why TV does not equal the sum of the load and the weight of the beam, although the beam is in equilibrium. हाँ, अच्छा जी। Any reason? So I don't know. What? Just try. Okay, look. पहले तो एनालाइज कर लेते हैं। So the vertical force which we calculated is 1100, okay, or 10625, 1063, right? This is the vertical force, okay. The upward force, okay, while we have the two downward forces, which is 4500, right? So this is 4500, right? So although the system is not rotating, so it's in equilibrium, it's rotational in equilibrium, right? um और लेकिन ये जो आपके पास वो है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज नॉट इक्वल, राइट? आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना, लाइक 4000 है, वहाँ पे 1000 है, राइट? सो यू हैव टू बैलेंस दिस फोर्स आउट। वो कैसे होगी? कोई आइडिया? यस, कैसे बात? So no idea. नो आइडिया ब्रो। पिवट हेल्प करेगा ना। Basically, pivot will provide the upward force in this direction. Okay, so it will cancel out the unbalanced force. Okay, and as well as this component, क्योंकि tension का एक component ये है, right? Tension का एक component ये है, right? Which is T sine 60. Okay, so we also have to nullify this component. Okay, so from the pivot there should be a force acting in this direction, which will have a vertical component. Okay, and a horizontal component. So a vertical component will balance this force, and the horizontal component will balance the tension. Okay, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, perfect. Sir, can you explain it one more time? क्या चीज? देखो पहले क्वेश्चन रीड कर Uh, लो, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन रीड किया no, बता। I meant the first one, the part one. पार्ट वन कौन सा? अबे मैं ये Big वाला। one. बी पार्ट वन, ये वाला।
G1. अबे ये तो बहुत पहले कर लिया था हमने। एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं और? ओके ब्रो, इसमें बस हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिए। सही है। हमारे पास जो है हम ये हमारे पास मैंने उस ऊपर वाली पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया। ओके ये वाली पिक्चर थी, हमने इसको जो है ना थोड़े से इसके कंपोनेंट बना लिए यहाँ पे। सही है। सो ओके। मेरे पास जो वेट था जो कि 500 न्यूटन का था, तो मैंने उसका 500 cos 60 का कंपोनेंट ले लिया। राइट। अच्छा 30 इन्होंने ये एंगल लिया था, 60 मैंने ये एंगल निकाल लिया। ओके क्लियर। ओके। ओके। सही है। एंड मैंने फिर इसका भी कंपोनेंट ले लिया 4000 cos 60। राइट। और कंपोनेंट वाली जो आपको पता है इंक्लाइन प्लेन में जो सिंपल कंपोनेंट्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। क्लियर। जी। सही हो गया। अच्छा जी। ओके। तो अब हमने देखा कि भाई ये जो दो फोर्सेस हैं दिस विल प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड इसका जो और ये जो टेंशन है दिस विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके इज दैट क्लियर। यस। सही है। हमने ये इस फोर्स को टाइम्स इट बाय द डिस्टेंस, क्योंकि 2.8 फुल डिस्टेंस है और वेट जो है वो सेंटर से लग रहा है यूनिफॉर्म बीम की वजह से, यूनिफॉर्म मेटल बीम की वजह से। सही है। तो हमने जो है ना सेंटर से इसका डिस्टेंस सेंटर तक इसका डिस्टेंस ले लिया 1.4। राइट। सो दिस प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस द 4000 cos 60 प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दोनों को ऐड कर लिया एंड इक्वल्स टू जो क्लॉकवाइज मोमेंट था वो हमने इसको सब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था हमने उससे इक्वेट कर दिया। ओके क्योंकि इसने क्या रखा है कि भाई इट इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। परफेक्ट चलो। अच्छा जी अब आ जाओ इस पे आ जाओ दोबारा से। Sir, बोलो बोलो कौन sir, बोल in रहा this question, you can talk about movement. है द लास्ट पार्ट। Yes. बेसिकली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अगर आप मोमेंट के हिसाब से बात करो। राइट। यहाँ पे इन्होंने कहा भाई कि स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई टी वी डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वेट। ओके दे एक्चुअली वांट यू टू कॉमेंट ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉट द मोमेंट। ओके क्लियर हो गया। Yes. यस। हम ये कहेंगे, देखो इसका ये बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन। ओके दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन और बच्चे इसमें भर भर के गलती करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी इस तरह का कोई भी सिनेरियो आता है प्रीवियसली ना उसने इस तरह के सिनेरियो दिए हुए होते हैं कि यहाँ पे जो है ना उसने कोई बीम लगाई हुई होती है और उसने जो है ना उसको बांधा हुआ होता है। देखें सर के क्वेश्चन। यस। Yes, sir. एक बीम लगाई हुई होती है और यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक वॉल वॉल के साथ इसको अटैच किया हुआ होता है। सही है। वॉल के साथ जो है वो इसको इस तरह से अटैच किया हुआ होता है। सही है। एंड ये आपके पास एक कहानी बन जाती है। सही है। यहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई मास लगा रखा होता है। सही है। कोई ना कोई यहाँ पे मास लगा रखा होता है। ओके और ये टेंशन होती है। सही है। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है कि यू हैव अ बीम, यू हैव अ वॉल एंड देयर इज अ टेंशन। राइट। लोड वोड लगा रखा है, थोड़ा सा इन्होंने अरेंजमेंट उल्टी की हुई है। राइट। अब देखो होता क्या है इन दीज टाइप ऑफ केसेस, जो सिस्टम होता है वो मोमेंट के हिसाब से तो इक्विलिब्रियम पे होता है। राइट। बट वो रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे नहीं लग रहा होता। राइट। बिकॉज if you consider this system, so you have the vertically upward force is 1063 newton, but the vertical downward force is 45 newton. Okay so आपको दिख रहा है कि भाई vertical forces are not balanced. Okay plus the horizontal component of the tension is also unbalanced. Okay so these are the two unbalanced forces. Okay while the system is in equilibrium momentarily. Okay मोमेंट के हिसाब से वो इक्विलिब्रियम पे, लेकिन फोर्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे आपको नहीं लग रहा क्योंकि वी हैव दीज टू फोर्सेस जो कैन बैलेंस है। ओके क्या ये बात समझ में आ रही है? यस गाइस क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Similarly, if you talk about this system, so if you consider the vertical component of the force, so vertical component of the force जो भी आएगा और जो horizontal forces जो vertically downward forces होंगी they will not be equal. Okay वो unequal forces आ रही होंगी, लेकिन moment उसमें जीरो आ रहा होगा। moment तब भी जो है ना moment के हिसाब से सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। राइट। तो अब आपको you required some additional force to balance out the resultant force. Okay this is your concern. Okay moment के हिसाब से system balanced है, you just want some additional force to balance the resultant force or remaining force. Okay guys क्या ये बात clear हो रही है? सही हो गया। Yes. अच्छा जी। तो टू हैव दैट एडिशनल फोर्स, वो बेसिकली ये पिवट से कांटेक्ट फोर्स की फॉर्म में आ जाती है। ओके पिवट, द कांटेक्ट बिटवीन द पिवट एंड द वॉल, राइट, प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ
force, right, that balance out this force and this force. Okay, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. हाँ जी, जरा आना बोल दो प्लीज। जी सर। नहीं समझ में आई? बस। क्या नहीं समझ में आया बोलो? क्या नहीं समझ में आया ये कल भाई? वाला क्वेश्चन की तरह है ना, ये कल वाले क्वेश्चन की तरह है ना। कल आई थिंक सो, उसमें आई थिंक ये वाली डायग्राम थी, है ना? इस तरह की थी, यस। हाँ। देखो ये बहुत दफा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि प्लीज कीप इन माइंड, सिंपल सा इसका आंसर है कि इसके अंदर रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होता है बट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होती। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दैट एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स की जो रिजल्टेंट को जीरो बना दे वो हमेशा पिवट से लगा करती है। ओके, सो हम ये कहेंगे कि भाई द upward force TV is not equal to the downward force, okay, as well as the um, horizontal component, horizontal component is। अच्छा अगर तो चलो फाइन फाइन, हम हॉरिजॉन्टल जाते ही नहीं है, खामखाई की लंबी होगी। उसकी वजह ये, ऑल्दो हम उसको कर सकते हैं लेकिन उसने जस्ट कहा है कि भाई आप जो है ना वर्टिकल प्लेन पे रहो, होशियारी करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन पे रहो, उसने सारी वर्टिकल फोर्सेस दी हुई। ओके, सो डोंट गो इधर उधर। ओके, सो द अपवर्ड फोर्स टीवी इज नॉट इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, सो pivot A should apply some upward force or that combine with TV, the vertical component of the tension, uh, and equal to the weight plus the load। ओके, ये आपके पास आंसर जाएगा। ओके, इसकी मैं तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा देता हूँ माइकिंग की। देयर इज एन अपवर्ड फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एट ए। ओके, फाइन, एंड अपवर्ड फोर्स एट ए प्लस। ओके, लुक उसने भी ये चीज़ बोली हुई है, बस ये चीज़ में बोली वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में रहे, वर्टिकल डायरेक्शन में रहो। और इसका तुम्हें मैं ये दिखाता हूँ। A small minority were able to explain that a vertical upward force must be present where the beam makes the contact with the wall. Many answers refer to the horizontal force. This answers did not relate to the question that were okay fine। चलो क्लियर हो गया? चलो भाई आ जाओ। ओके भाई, डन हो गया। सो ओए टाइट क्वेश्चन आ गया। एंड अबे दो दो क्वेश्चन दिए हुए यार। ओ भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। ओके, आज अभी रीड कर लो, कौन रीड कर रहा है? यूसुफ जरा रीड कर लोगे प्लीज? ओके, yeah. A 240-volt power supply S with negligible internal resistance is connected to four resistors as shown. Two resistors of resistance 550 ohm and 950 ohm are connected in series across S. Two resistors of resistance 350 and R are also connected in series across R. So many resistors. The current supplied by S is 0.4 ampere. Current I1 and I2 in the circuit are shown in figure 5.1. Calculate I1. ओके, I1 निकालना है। अच्छा, आप सर्किट को ऐसे कंसिडर कर सकते हो, कैन यू कंसिडर दिस सर्किट? Can we take it like just A for the first time and then we can do B later? Like that. मतलब एक मिनट, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप अगर जो हो ये ले लो। सही, सिर्फ ये मैं वाला यही बोल पोर्शन। रहा हूँ। ओके गुड है। Yes.
सही हो गया। सो आप बस ये वाली चीज़ को कंसिडर कर लो, बिकॉज पैरेलल सर्किट है। सो इफ दिस इज 240, राइट, तो यहाँ पे भी 240 आ रहा होगा, राइट। बट अब यहाँ पे बस यू हैव टू मेक श्योर कि करंट 0.4 नहीं लेना, क्योंकि दिस 0.4 करंट इज इन द बैटरी, Yeah. दैट इज ड्यू टू द होल ऑफ द सर्किट, राइट। सो और आपको Same पता as है कि V of I is equals to V over R 240 or 550 plus 950, right? यस, 950, गुड। सो आपने कहा कि भाई V इक्वल्स टू आई आर, एंड आपने बोला कि भाई 240 डिवाइडेड बाय 550 प्लस 950, ओके। हाउ मच? You get 0.16. 0.16, fine. So out of point 4, there's 0.16 current going in this direction. So the remaining 0.24 will go in this direction. Okay, is that clear? चलो, Yes. the resistance R. Okay, fine. अब again आप यही चीज कंसिडर कर लो, अगेन आप यही So चीज you कंसिडर कर लो, बट यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ओके, सो 350 और R, ओके, सो you just take 350 240 over 350 plus R is equal to 0.24. 0.24, fine. So 240 divided by 0.24, by formula लिख देना, V equals to IR, okay, and is equals to 350 plus R, okay, so ये 250 हो जाएगा ऐसे ही। ये यहाँ से 100 आ रहा होगा। So 650 नहीं हो रहा? मैं आती maybe I made a mistake. कितना? I got 650. Wait, let me check something. ओके, 240 का वोल्टेज है, और Sir, 650 is correct. I'm also getting Yeah, 650. 650 आ रहा है. 650 आ रहा है, ओके, 650 आ रहा सॉरी है. सॉरी। तो ये बेसिकली 1000 फिर आ रहा होगा, है ना, जिसमें आपके पास 650 आ रहा है। फाइन फाइन फाइन, चलो आगे आ जाओ। And the ratio of power transformed in resistor of resistance 350 and power transformed in resistor of resistance 550. ओके, So P is equals to V square over R करेंगे ना? अबे नहीं ना फिर क्या करेंगे? ब्रो, ये वाले फॉर्मूले से मज़ा नहीं आएगा। हो जाएगा, इससे कोई मसला नहीं है, वेट, इससे कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, बट इसमें फंस जाओगे, बिकॉज वी इज नॉट सेम, राइट। सो यू हैव टू सेपरेटली वर्क फॉर इंडिविजुअल वीज। 550 के लिए अलग काम करना पड़ेगा, 350 के लिए अलग करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द वीज, राइट। लेकिन इफ यू यूज आई स्क्वायर आर फॉर बोथ द केसेस, ओके, सो वी नो दैट के आई स्क्वायर 500 वाले के अंदर जो आई स्क्वायर आया था 0.16 है, 0.16 स्क्वायर, ओके, एंड 500 की उसकी रेजिस्टेंस है, एंड नीचे वाले के अंदर जो आई आ रहा है दैट इज 0.24, जो कि हम पहले काम कर चुके हैं। यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग द न्यू थिंग्स। समझ रहे हो भाई? Yes, समझ गया. फाइन, निकाल दो भाई, कितना आता है? एक सेकंड लगता है. 0.69 आ रहा है मेरे पास. 0.69 स्क्वायर, स्क्वायर ओ क्या एक भाई? गलती हो गई. एक गलती हो गई, गलती हो गई. ओके, एक सेकंड. 1.43 आ रहा है. 1.43, सो 1.4 हम ले लेते हैं। तो आपने उल्टा लिखा था. क्या वो जी? उल्टा लिखा हुआ. ये उल्टा लिखा है शायद ये. अच्छा, सॉरी सॉरी। इसको ऊपर कर देते हैं, सही हो गया, सीधा हो गया। चलो आगे आ जाओ। 2 points are labeled A and B as shown in figure 5.1. Calculate the potential difference VAB between A and B. यार ये बहुत टाइट चीज़ है, Um, VAB, ओके, लेट मी जस्ट हैव दिस सर्किट डाउन देयर। क्या अच्छा याद जी, करें? क्या मतलब बे?
ट्राई तो कर मुझे भाई। समझ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस VAB बिटवीन A एंड B। अच्छा, सेंस बन रहा है दिमाग में या ऊपर से ही जा रहा है? तो मतलब आर दे आस्किंग अस टू टेक द करंट देन प्लस द रेजिस्टेंस, फिर दोनों का V निकाल के माइनस कर दो दूसरे के साथ। हाँ, करना यही है। बट अगर आप करोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डू इट इनकरेक्टली मे बी। अच्छा, बाय द वे हमने आर जो निकाला था डेट वाज 650 बाय द वे, ओके। अच्छा जी, चलो। सो अच्छा तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड बी का, सही है। सो दिस मीन वी फर्स्ट हैव द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए एंड द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बी सेपरेटली, एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे ही। सो यस। potential difference of a b means we have to find out the potential value of a, और उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना पोटेंशियल वैल्यू ऑफ बी से, ये b माइनस ए कर दोगे, सही है। ये सही है। सो नाउ अब पोटेंशियल ऑफ ए कैसे निकलेगा वी ए कैसे आएगा? यस, एनी आइडिया? कुछ तो बोलो यार। करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस? करंट तो 0.6 है, वो तो थोड़ा सेम रहेगा। रेजिस्टेंस कौन सी लोगे? Do we minus the resistance or not? क्या मतलब? Like resistance को minus करना है? नहीं। अच्छा चलो, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर रहे हो अगर, सो अगर आप कर दो, करंट है 0.16 का, इंटू रेजिस्टेंस है 550 की, ओके। मेरे पास आ रहा है 88 वोल्ट। 88 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन? यस, देखो, दिस मीन्स दैट एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्शन जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, एट दिस पॉइंट यहाँ पे मुझे 240 मिलेगा, ओके। एट दिस पॉइंट यहाँ पे मुझे 240 मिल रहा है, राइट। आउट ऑफ दैट 240, 88 वोल्ट गेट ड्रॉप्ड across 550 ohm resistor, okay. So how much will be remaining out of 240? Yes, 152. 152, okay. So at a the voltage is 152, okay. Is that clear? At a the voltage is 152, okay. So उसके लिए आप क्या करोगे, I times R कर लोगे, सही है। और करंट है 0.16 का, सही है, टाइम्स इट बाय 950 वाली रेजिस्टेंस, राइट। सो यू विल गेट 152। गैस, क्या ये बात समझ में आई है? वी ए क्या समझ में आ गया? ये जराहाना बोलो प्लीज, क्विक। यही जी सर। काम आप वी बी के लिए भी कर लो। यूसुफ, नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ गया। क्या मतलब? जो जो ज्यादा नहीं समझ में आया वो क्या क्या सीन है उसका? ये why don't you take 950? नहीं ब्रो। आप 950 स्पीड में लेते ब्रो हैं। देखो, हमें अगर ए पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो जी। जो चीज यहाँ पे रिमेनिंग होगी वी हैव टू कंसिडर दैट, राइट। if you consider यस। 500 550 ohm ki resistance, so that will give you the voltage lost or dropped or utilized around this resistor, okay. So 88 is actually absorbed by this resistor, right? So out of 240, 88 यहाँ पे गायब हो गया, right? So when you are यस। standing at A, so you won't receive that 88 out of 240, so जो भी remaining होगा वो आपको ओह ओके। मिलेगा, okay. सही 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 Okay, या। and the similar concept will be for the point B, okay. So आपके पास current है 2.4 का, right, और R की जो resistance है वो है 650, right. So you will get how much? 0.24 into 650 is 156, 156, okay. This is VB, okay. Now you have VA, you have VB, you can subtract it, you'll get the answer, okay. So that is just 4 volt, okay. Is that clear? One more question. Why don't Yes. you take 350? Why 650? Okay, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप 350 की रेजिस्टेंस लोगे, सो जब करंट 350 से पास होगा, सो देयर विल बी द वोल्टेज ड्रॉप, ओके। सो 350 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करंट करें 0.24, ओके, सो देयर इज 80 वोल्ट, 84 वोल्ट का ड्रॉप, ओके। 84 वोल्ट का ड्रॉप, सही है। सो
84 वोल्ट जो है वो 350 पे ड्रॉप हो गया, यूटिलाइज हो गया, राइट? सो आउट ऑफ 240 जब आप बी पे आओगे, सो यू विल ओनली लेफ्ट विद 150 156 वोल्ट्स, और ये 84 आपका खत्म हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? अब तुम्हारे जहन में एक और क्वेश्चन आएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन समझ जी में आ गया। जी अब एक और क्वेश्चन। सही है कि भैया, ओके फाइन, मान लिया हमने। अगर आपने इतनी गधा मजदूरी की, आपने यहाँ पे निकाला 152, यहाँ पे निकाला 156, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो है 4 आ रहा है। सही है। अगर आप वोल्टेज लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपके पास 4 आएगा, राइट? क्योंकि अगर आप देखो 88 माइनस 84 तो भी 4 आ रहा है, राइट? तो फिर हम हमें कैसे पता चलेगा? हम तो दोनों में से किसी को भी सही कर सकते हैं, राइट? बट द करेक्ट वे इज कि अगर आप ए के लिए निकाल रहे हो, सो आपको इसकी रेजिस्टेंस यूज करके इसका वोल्टेज निकालना होगा, तो आपके पास जो है ना वो करेक्ट आ रहा होगा, राइट? ऑल्दो आंसर अगर आप इससे यूज करोगे तो भी सही आएगा, बट यूज दैट वन, तो उससे आपका आंसर प्रॉपर आ रहा होगा। क्लियर हो गया? और कुछ केसेस के अंदर जाके जाके ये ना ये प्रॉब्लम करता है कि अगर आप ये वाला ले लोगे तो उससे भी गलत आंसर आने लगेगा। सही। तो जस्ट कंसिडर, मतलब जिस पॉइंट पे आप वोल्टेज निकालना चाह रहे हो ना, कंसिडर द रेजिस्टेंस अहेड ऑफ इट। ओके? तो बस ये आपने आपका रूल है। ओके, इज दैट क्लियर? यस। इसकी इसकी जरा मार्किंग की देख लेते हैं। सो ये दैट इज पार्ट बी का था, आई थिंक पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट। ओके, B1. Okay, the correct answers was obtained only by the strongest candidate. Okay, there were many answers with no response. Many candidates would benefit from the further practice of the method to determine the potential at the particular point in the circuit or the potential difference across the component in the circuit. Okay, is that clear? तो ये चीज यस। बहुत बच्चों में लैकिंग है। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। The resistance R is increased. State and explain the effect on VAB. ओके, अगर तो आपने इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज की होगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? Increase. ओके, सो पोटेंशियल, अच्छा, यानी पोटेंशियल एट बी इंक्रीज हो जाएगा। सही है। तो जब आप VA - VB करोगे, सो जो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करोगे, यू विल गेट ग्रेटर VB, राइट? समझ लो। Yes. मतलब लेट्स से ये 156 है, लेट्स से ये इंक्रीज हो गया 160 हो गया, राइट? सो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट हायर वैल्यू। क्लियर ना? आसान सा था। सो हम ये Yes. कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग R विल increase VB, which will increase VAB। ओके, चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अबे यार कितने क्वेश्चन है यार। अच्छा जी, ओके, रीड कर लो भाई। कौन रीड कर रहा है? um, रेहान के रीड कर सकते हो प्लीज? 12-volt battery with internal resistance 0.5 ohm is connected to two identical filament lamps L1 and L2 as shown in figure 6.1. The lamps are connected to the battery via switches S1 and S2. The power rating of each lamp is 48 watts for a potential difference of 12 volts. ओके, S1 is closed and S2 is open. सही है। State and explain whether the power transformed in L1 is 48 watts. ओके, L1 ये रहा, और ओके। अच्छा, इन्होंने कहा है कुछ चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है, आइडेंटिकल फिलामेंट लैंप्स है। सही है, पहली चीज़। ओके, एल, ओके। अच्छा, इन्होंने 48, पोटेंशियल डिफरेंस 12 पे। सही है। आप क्या कहते हो इंटरनल रेजिस्टेंस के होते हुए? आप क्या कहते हो? आपका क्या ख्याल है? यस, एनी आइडिया? So what do you mean? Like they're asking कि will there be a 48 volt 48 watt power across L1, और ज्यादा होगी या कम होगी? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? So will it be less? Any reason for that?
Because there will be internal resistance, some power is going to resistor. Okay, okay. A better way is to say um, the internal resistance causes some voltage loss. ओके, पहली चीज सही हो गया, सम वोल्टेज लॉस। जब वोल्टेज लॉस हो गए तो उसके बाद क्या होगा? सो ओके, वोल्टेज available for L1 will be lesser than 12 volts. Okay, so power, sorry, so power will also be lesser, will also be lesser. Okay, अच्छा, हम इसमें पावर पावर को वो नहीं करते, हम ज़्यादातर जो है ना लॉस वोल्टेज के बारे में बताते हैं। इसकी एग्जाम रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। कैंडिडेट फाउंड द एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट। ओके, रैन सुन रहे हो? A small minority candidate correctly linked the loss voltage due to the internal resistance of the battery with the terminal potential difference being below 12 volt. Okay, हमें terminal potential difference का वर्ड इस्तेमाल करें। so voltage available for the okay, voltage available से अच्छा है so terminal terminal PD या PD for L1 will be okay. So this is far more better term. Okay, clear हो गया? So आपको जो है ना रेयान, आपको जो है ना like it's better to relate with the internal resistance and आपको जो है ना फिर उससे voltage loss से आप इसको relate करोगे rather than power से। okay, चलो आगे आ जाओ। S2 is now also closed. State and explain the effect on the current in L1. okay, क्या हो जाएगा current? So any idea when you're closing the So sir, switch? current is shared current is, अबे नहीं, लेकिन वो shared जो current होगा that will be greater or smaller or what? towards, so the current in the battery equals to the total current in the Nine, circuit. nine, 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 nine. Abe, look. So when you're closing the switch S2, okay, switch S2, S1 is closed and S2 is open. So yeah, so when you close both the switch, okay, so now these two become in parallel with each other, okay, and you know that when the two similar things become in parallel, or when the two things in parallel, their resistance, the overall resistance will decreases, right? So इसकी resistance कम हो जाएगी, right? यानी इस portion की resistance कम हो जाएगी। सो अच्छा, अगर इस पोर्शन की रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगी सो विल हैव द ओवरऑल रेजिस्टेंस गोइंग डाउन। सो हमारे पास करंट तो इंक्रीज होना चाहिए, राइट? और एक मिनट, लेकिन स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द करंट इन L1। अच्छा जी, L1 के अंदर अगर तो बैटरी का तो करंट हमारा डिक्रीज होना चाहिए वैसे तो। लेकिन हम उसको और किस तरह से कह सकते हैं? ये चलो सही है, आप आपकी बात फिर सही है, हम मान लेते हैं आपकी बात की जो है ना वो ये कह देते हैं कि भाई यार पता नहीं आ रहा यार क्यों। अम, अगर हम इसको बंद कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम बंद कर रहे हैं, सही है। सो रेजिस्टेंस कम है, सो देयर विल बी द स्मॉलर टर्मिनल पोटेंशियल विल बी देयर। ओके, सो जब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल कम होगा सो विल हैव द स्मॉलर करंट, बस इतना कह सकते हैं, सही है। सो ये हम कह सकते हैं कि भाई सो क्लोजिंग S2 विल मेक टू लैम्प्स, टू लैम्प्स, मैं थोड़ी सी लंबी करके लिख रहा हूँ, टू लैम्प्स in parallel. Okay, in parallel. So resistance of the lamp या ओवरऑल रेजिस्टेंस, या चलो रेजिस्टेंस की हम बात नहीं करते, हम डायरेक्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। सो टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस will be
lesser. Okay, so lesser current will go to L1. L1, okay, चलो। अच्छा, रीड कर लो, आगे रीड कर लो। State and explain the effect on the resistance of L1. ओके, सो अब खैर हमने वो आंसर तो पहले ही लिख दिया हुआ है, बट हम यही लिख सकते हैं कि भाई अगर तो आप पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर रहे हो, सही है, तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर रहे हो तो अगेन आपकी तो रेजिस्टेंस कम ही होती है। बट यू कैन सी दैट कि भाई इफ़ यू आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, सो देयर विल बी मोर वोल्टेज लॉस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस और लेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल। इफ यू हैव द लेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यू विल हैव यू आर गोइंग टू हैव द लेस रेजिस्टेंस फॉर L1। ओके, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द terminal potential difference will be smaller, will be smaller, so smaller resistance। सही हो गया, ये हम कह सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, इसकी इसकी चेक करते हैं, मजे की नहीं, मजे मजे नहीं आया इसमें। They're saying greater loss voltage or the potential difference across the lamp, which is the terminal potential difference, reduces. Okay, fine, and decreases, hence the resistance decreases। सही है, ये तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख चेक कर लेते हैं बस। Okay, the majority candidate consider explanation involving incorrect physics, stating the current in the lamp would be less because the current is now split. Okay, रेयान, समझ रहे हो ना रेयान, आप ये कह रहे Yes, थे। sir. ओके, सो दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट फिजिक्स, बिकॉज जब आप उसको सर्किट के अंदर उसको क्लोज कर रहे हो ना, तो हमें वो वाला इफेक्ट, उस इफेक्ट की बात नहीं करनी है। हमें बेसिकली ये चीज़ बतानी है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है व्हेन यू आर एडिंग वन मोर रेजिस्टेंस। ओके, और वन मोर रेजिस्टर, सही। दिस इज अ फंडामेंटल मिसकॉन्सेप्शन, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ करेक्टली सजेस्टेड दैट द लॉस वोल्टेज वुड बी ग्रेटर। ओके, so if you connect the two things to component in parallel and there's a internal resistance present, तो जो दो चीजें parallel के अंदर हैं, उनकी जो resistance होगी वो कम हो जाएगी, so the loss voltage will be prominent and there will be lesser current in the circuit then। okay, or lesser potential difference available in the circuit। okay, तो खैर अच्छा जी, would be greater as more current would be would be supplied by the battery। This would be result in the terminal potential difference reduced and the power output of the each lamp would be less। okay, can it found difficult the IU characteristics of the lamps। okay, fine, कुछ और चीज़ें। हम्म ओके फाइन, चलो आ जाओ भाई, आ गया जो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ये तो बेकार चीज़ है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, आ जाओ भाई। इरफान, आर यू लाइव? Yeah. ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन। An arrangement that is used to demonstrate interference with waves on the surface of water shown in figure 7.1. ओके, Two dipoles D1 and D2 are connected to a motor and a DC power supply. Initially, only D1 vibrates on the water surface to produce waves. The variation with distance x from D1 of the of the displacement y of the water at one instant of time is shown in figure 7.2. ओके, so the amplitude is given as 2.24, 2.48, 3.2, 3.2, fine। okay, the amplitude of the wave is straight away 3.2, fine। आगे आ जाओ, what's the wavelength of the wave? I think it's 20, yes, 20 millimeters। Yeah, 25 minus 5. Why 25 minus 5? Uh, I just took it from Okay, the यहाँ से यहाँ तक, right? zero. Yeah, till Okay, there. fine, no problem, fine, that's also true। okay, आगे आ जाओ, please move on।
Yes, please read the question. The two dippers D1 and D2 are made to vibrate and waves are produced by both dippers on the water surface. State and explain whether these waves are stationary or progressive. Okay. The dippers are producing energy, they're propagating energy, right? So they can be the Progressive. yes, good. So dippers are propagating energy. So um wave cannot be stationary. Okay, आगे आ जाएं please. Yes, Explain why D1 and D2 are connected to the same motor. yes. Any idea to produce? किसी और को कोई आइडिया है? यूसुफ, रेहान, इरफान? Mm. Yes, to produce constant phase difference or coherent phase. Okay, to produce wave with constant phase difference. Guys, please keep in mind कि जब भी whenever you connect the two sources of wave to the same power supply, this will always give you the same phase difference or coherent phase. Okay, so this is one of the technique through which we can achieve the coherency in the wave. Okay, by connecting the two sources from the same power supply. Okay, is that clear, guys? चलो Yeah. Yeah. आगे आ जाओ please read on. The points A and B on figure 7.1 are at their distances from D1 and D2 shown in figure 7.3. Okay, State and explain the variation with time of the displacement of the water on the surface at A. okay, wait. So A is at this point. Fine. So basically, they're asking the way display. They're asking whether there will be the constructive interference or destructive interference. This is a simple concept with this question. Okay, and for the constructive interference or destructive interference, you first have to discuss about the path difference and then the phase difference, and then you have to make the comment. Okay, or the conclusion. Okay, so the path difference is basically dA1 minus dB1. So it's basically 1 meter. Okay, 1 centimeter का path difference आ रहा है. Okay, and okay, the lambda is given as how much? क्या lambda given है? Okay, the wavelength is given as 20 millimeters. Okay, सही हो गया. So अगर हम um if we just find out n, so that would be 1, yeah, 1 exponent negative 2 divided by 20 exponent negative 3. So that is, sorry, we have to n lambda. So n is zero point 0.5. Okay. So the path difference is n, okay, lambda by 2. Okay. So the path difference is lambda by 2. Calculation क्या है? मैं calculation भी show कर देता हूँ. So I did d, एक मिनट, d2a, अबे यार एक मसला हो गया. Wait. d2a and d1a निकालना है ना. So d2a minus d1a gives you 2 centimeters distance. Okay, 2 centimeter. Fine, मैंने ये गलत लिख दिया था, 1 centimeter. Okay, so path difference हमारे पास आ रहा है 1 centimeter. Okay, so if you divide the path difference, which is 2 exponent negative 2 divided by
20 millimeters, which is the wavelength. सही, so you will get n, जो कि आपके पास आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1 का आ रहा होगा, राइट. सो पाथ डिफरेंस इज जस्ट लैम्डा. ओके, सही है. और अगर पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा का आ रहा है, सो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? फेज डिफरेंस वुड बी, phase difference would be of 360 degrees. See. Okay, and if you have the path difference of lambda and phase difference of 360-degree, then the amplitude, you'll see the maximum displacement of the water at that point. Okay, so the displacement would be 3.2 millimeters. Okay, look, देखो उसने कहा है कि वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट बता दो. वी ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ 3.2. सही है, तो वो हमारे पास जो है ना वो आ रही थी. सही है. अच्छा, बल्कि एम्पलीट्यूड जो है ना ये भी नहीं होगा, उसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, 6.4 होना चाहिए, राइट. बिकॉज the wave coming from D1 will have 3.2 amplitude, and the wave coming from D2 will have the same amplitude, right? Will have a 3.2 amplitude, right? So when the two wave meet at point A, the resultant amplitude or resultant displacement will be double. So the overall displacement would be 6.4 millimeters, right? And we use the concept of the path difference, and then with the phase difference, और हमने ये निकाल लिया, okay? And then at B, okay? So at B पे अगर तुम काम करने वाले हो, so at B पे आप path difference निकाल लो. So path difference हमारे पास आ रहा है D2B minus D1B. Okay, सही है. So that is basically 6 minus 5 is just 1 centimeter. Okay, and इससे path difference आपके पास आ जाएगा 1 exponent negative 2 divided by 20 exponent negative 3, that gives you 0.5. Okay, so path difference हमारे पास आ गया. Path difference is 0 point or lambda by 2. Okay, path difference is lambda by 2. So phase difference हमारे पे कितने का आ जाएगा? Phase difference will be 180 degrees. Okay, और जब phase difference 180 degree का होगा, so you will see the destructive interference, but since you have to comment in terms of the displacement, so you'll see no displacement. Okay, no displacement at P. Fine. चलो. आपके पेपर में तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं हो रहे. क्या चीज, क्या चीज? आपके पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते ना इसके. अबे ये आसान क्वेश्चन है भाई, इससे ज्यादा मुश्किल आते हैं. ऊपर से ओह क्या मतलब? अच्छा. क्या चीज? ऊपर से क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, मैं थोड़ी बात. थोड़ी बहुत. अच्छा. जी. दिस क्वेश्चन, अच्छा जी. um, हमारे पास है सी. There were large number of large number of blank responses, and many of the answers did not answer the questions. Okay, there were a few answers that gave a correct path difference and then suggested that the constructive interference would occur, but these answers did not always go on explain the effect on the displacement of the water. You have to explain the effect on the displacement. Okay, if you give the value, ओके, जो आपने 6.4 दिया, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. एंड इफ यू जस्ट गिव द वैल्यू कि आप जो है, अगर आप जो हो वो कर लो, क्या बोलते हैं, या आप बोल दो मैक्सिमम मिनिमम तो भी चल जाएगा. सही हो गया. अच्छा जी. देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैंक रिस्पॉन्सेज. ओके फाइन, जनरली सिमिलर टू. सही सही सही. चलो आ जाओ, लास्ट पार्ट. ओके, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आइटम, लास्ट क्वेश्चन है. ओके, ये वाला अटेम्प्ट करते हैं, वो बहुत लंबी है. सही है, उसमें लंबी करनी पड़ेगी. ऑल्दो दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूँ. सही है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे तीन चीज़ें हम लिख रहे होते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम गोज अनडेविएटेड. उससे हमें कंक्लूजन पता चलता है कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. सही है. द सेकंड थिंग इज सम ऑफ द एटम डेविएटेड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएटेड थ्रू द स्मॉल एंगल. उससे हमें पता चलता है कि द न्यूक्लियस इज चार्ज्ड. एंड द थर्ड थिंग इज कि भाई वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक. तो उससे हमें पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज
very small, and all the mass of the nucleus is concentrated toward the center, right? These are the 3 points, their observation and their conclusion. Okay, fine. But last part करते हैं, उसके बाद end करते हैं. So, in a model of the copper atom of the isotope this, the atom and its nucleus assumed to be spherical. Okay, the diameter of the nucleus is this much, the diameter of the atom is this much. Okay, calculate the density of the nucleus. Okay, so density is equals to mass over volume. Okay, सही हो गया. क्या कर सकते हैं भाई इसमें? 3 नंबर दे रहा है यार, हाँ मखाई की लंबी करा रहे हैं. तो 4/3 पाई क्यूब करेंगे ना, है ना? डायमीटर डायमीटर को वो तो आ जाएगा, मास का क्या करें? फिर द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी मास सेम होने वाले फिर. सही है, क्योंकि हमारे पास जो है m ओवर v. सही है. सो दिस इज द बिग फ्रैक्शन वाला साइन. सही है, बिग फ्रैक्शन. सही है. एंड ये हमारे पास आ जाएगा रेशो. सही है. अच्छा जनाब, चलो m से m तो कैंसिल कर दो. सही है. डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द एटम. ओके, ये हमने रख दिया. सही हो गया. सो ये रिवर्स हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. सही हो गया. एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम इज बेसिकली 4/3 पाई क्यूब. सही है ना? 3/4 पाई आर क्यूब. ओके, डिवाइडेड बाय 3/4, 4/3 पाई क्यूब, राइट? सो ये सब चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी. जस्ट आर ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय आर ऑफ द न्यूक्लियस विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द एटम. ओके फाइन. चलो हो गया, जिंदगी आसान हो गई है. सही है. सो द डायमीटर दे रखा है, रेडियस हम ले लेते हैं 1 अच्छा सॉरी, एटम का लेना है ऊपर. सो 2.3 एक्सपोनेंट -10 डिवाइडेड बाय 2. ओके. अच्छा, अगर हम 2 ना भी लगाएं तो भी हो जाएगा काम, क्योंकि डायमीटर का रेशियो लोगे, रेडियस का रेशियो लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही है. क्यूब डिवाइडेड बाय 2.8 एक्सपोनेंट -14 का क्यूब. ओके, निकाल दो भाई, कितना आता 5.54 into 10 to the power 11. है? 5.5, मतलब 1 बिलियन का डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और डायमीटर, न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड जो एटम का जो डायमीटर द न्यूक्लियस है, उसका जो डायमीटर है, देयर लाइक 1 बिलियन टाइम स्मॉलर एंड ग्रेटर. नाइस, और ग्रेटर देन दैट. फाइन. सही हो गया. चलो बस ये हो गया, यहाँ तक की कहानी हो गई. अच्छा भाई सुन लो, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुनते हुए जाओ. देखो, तुम लोग ने यू हैव टू अटेम्प्ट जून 2015 एंड 21 and 23, and October 2015, 21 and 23. Okay, is that clear guys? Yes. Yes. बेटा देख लो, तुम लोग ने ये होमवर्क करना है. रयान, यू आर वेरी Yes, sir. वीक इन इन थ्योरी वाले पार्ट्स, सो बी वेरी केयरफुल. ये इंसान के बच्चे की तरह ये होमवर्क मुझे करके सबमिट करवा दो. और यूसुफ, यू टू. सही है, आपकी भी थ्योरी वाली थोड़ी सी वीक है. सही है. पेपर करो. सही है, पेपर करके उसका पीडीएफ बनाओ एंड डू सेंड मी द पीडीएफ. सही है, मैं चेक करके बता दूंगा कि इसमें थ्योरी में क्या गलती है, और कैलकुलेशन वाले पार्ट वो तुम खुद ही मार्किंग की से भी चेक कर सकते हो. ओके, so but make sure to send me the paper, right? 21 and 23 के variant by the way YouTube पे भी uploaded है ना. So if अगर तुम्हें कोई problem है, you can check the videos. अगर कोई मैं नहीं समझा सकूं, otherwise you can ask me. Okay, बट Okay, प्लीज sir. मेक श्योर कि सेंड कर दो, ताकि मैं तुम्हें हाईलाइट तुम्हारी मिस्टेक्स बता सकूं. सही है. मे बी तुम्हें अब तुम्हारे जो भी नंबर कटेंगे ज़्यादातर वो तुम्हारी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन में कटेंगे. ओके, सो बस तुम्हें उसको सही करना है. सो यू विल गेट द इम्प्रूव ग्रेड. ओके, सो चलें, जस्ट Okay. दैट्स इट. चलो. चलो, Love. ओके गाइस, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. Reference. हाफिज़. हाफिज़.